स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जॉर्ज स्क्वायर के सिटी चैम्बर के सामने फ़लस्तीन के हक़ में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया, जिसमें हर रंग व नस्ल के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रहे हैं फरीद अंसारी। ग्लासगो में जॉर्ज स्क्वायर के सिटी चैम्बर के सामने फ़लस्तीन के हक़ में ज़बरदस्त मुज़ाहिरा किया गया, जिसमें हर रंग व नस्ल के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने गजा में जल्द अज जल्द जंग बंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गजा में मासूम बच्चों, डॉक्टर्स और सहाफ़ियों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। इमदादी कामों में रुकावटें डाली जा रही हैं, ये जुल्म बंद किया जाए। taking them to Congo, Rwanda or whatever country. We are not leaving. This is our land. This is our country. We are staying there. Shame on you, Player. Shame on you, UK government and everybody who get involved in this. We are not leaving. The people of Gaza will die in Gaza rather than leaving Gaza. On our body. On our body. Never seen before. Over 100 journalists slaughtered, their families murdered, and living under a genocidal siege. Yet they have woken the world to this genocide. They epitomize the unbreakable spirit of the people of Gaza. That is enough. But I support Hamas in the war against the Israeli army. And I make it clear that of course I support any group in the Palestinian resistance who fights the occupying Zionist army. I wrote a blog at the time of October the 7th, if you remember, when the Palestinians of Gaza broke out of their ghetto, comparing it to the Warsaw ghetto. मुजाहिरीन ने गजा में फलाही तंजीमों के अरकान को शहीद किए जाने के हवाले से अमली मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफवाज के जुल्म और बर्बरियत को बंद किया जाए। Assalamu alaikum. We're here today in Glasgow outside the city chambers to raise our voices in support of the Palestinians, because in Gaza people are being massacred. A genocide is unfolding before our very eyes, and it is so important that we come together and we stand up in solidarity for the people in Gaza. It's so important that the Glasgow City Chambers and our Glasgow councillors speak out about the genocide, about the ethnic cleansing that's happening in front of us every single day. We must come together, we must raise our voices, and we must be heard and not allow the world to be silenced. Glasgow City Chambers इतने सारे लोग जो ऐसे इकट्ठे हुए हैं for one reason and one reason only. जो गजा च हो रहा है, इतना जुल्म, इतनी तशद्दुद कर रहे हैं बच्चों ते, औरतां ते, साडे मर्दां ते, इतना जुल्म मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़िंदगी च नहीं देखा। तो जितनी मतलब खून खराबा उत्थे हो रहा है, साडा काम बनना है कि हर रोज़ असीं बाहर निकलिए। I first went over to the West Bank 12 years ago as a tourist, and I witnessed the brutal regime of Israel occupation and how it impacts on patients with cancer. Once you've been there and you've witnessed that, you have to look at your conscience to see what can we do, how can we assist from Glasgow. And that led to me developing with my Palestinian colleagues at Bethlehem University the first. Yeah, today we're here just to realise what the impact is happening in Gaza today. We had very good speakers. We condemn everything that's happening with the Israelis. We condemn the lack of speakers from the governments that are backing the Palestinians. We want an immediate ceasefire right now. The smell of blood is everywhere in Gaza today as we speak. It's horrific, and we are disgusted by the silence of all the world leaders. उन्होंने मजम्मत की जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने मचा रखी है, गाज़ा पर, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ बच्चे, बूढ़े, जवान,
मर्द औरतें सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, अपने जज्बात का इजहार किया और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो यकजहती उनके साथ करते रहेंगे। और यहाँ के जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। We're at George Square in the centre of Glasgow. Alhamdulillah, we're outside the city chambers, mashallah, and it's been an absolute fantastic afternoon. We've had people come in their droves, people have come in their thousands, mashallah, all to protest over 90 days of bombing. Over 90, it's been something like 93 days of bombing since the 7th of October, and alhamdulillah, we've stood together, we've stood united with all the different faiths. Remember, this is not just about Islam, this is all faiths, people with a faith. मुजाहिरीन ने ग्लासगो सिटी काउंसिल और दीगर इदारों के सरबराहान से मुतालबा किया कि इसराइल को निहत्ते शहरियों पर मजालिम ढाने से रोका जाए। हम सिटी चैम्बर के सामने मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखेंगे।